નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, દૂરદર્શન સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે। બુલેટિનની શરૂઆત કરીશું હેડલાઇન્સથી। કેવડિયામાં લાઈફ મિશનનો થયો શુભારંભ। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ મિશન પ્રમુખોના 10મા સંમેલનમાં લીધો ભાગ। દુનિયાભરના ભારતીય મિશનોના 118 પ્રમુખ રહ્યા ઉપસ્થિત। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે યુએન મહાસચિવ સાથે કરશે દ્વિપક્ષીય બેઠક। બંને નેતાઓ વચ્ચે જુદા જુદા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર થશે ચર્ચા। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે સાપુતારાથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીને જોડતા હાઈવે કોરિડોરની કામગીરીનો કરાવશે શુભારંભ। પ્રધાનમંત્રીના હસ્તે તાપી જિલ્લામાં 2192 કરોડથી વધુની રકમના વિવિધ પ્રકલ્પોનું થશે ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ, જેમાં સાપુતારા, શબરીધામ, ઉકાઈ ડેમ, દેવ મોગરા સ્થળોમાં પ્રવાસન ઉદ્યોગનો થશે વિકાસ। વિદેશ મંત્રી ડોક્ટર એસ જયશંકરે કેવડિયામાં બોત્સવાના વિદેશ મંત્રી લેમોગાંગ કુઆપે સાથે કરી મુલાકાત। બંને મંત્રીઓએ કરી દ્વિપક્ષીય સંબંધોની વર્તમાન સ્થિતિની સમીક્ષા। આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર અનુસાર યુક્રેનમાં વધ્યું વીજળી સંકટ। આજથી બંધ થશે આપૂર્તિ। અમેરિકાએ યુક્રેન સંકટ વચ્ચે રશિયા પર લગાવ્યા નવા પ્રતિબંધો। આઈસીસી ટી20 વર્લ્ડ કપના ક્વોલિફાયર્સની પ્રથમ મેચમાં આજે નેધરલેન્ડ અને શ્રીલંકા વચ્ચે મુકાબલો। બીજી મેચમાં નામીબિયાની સામે યુએઈની ટક્કર। સમાચાર વિગતવાર જોઈએ। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના પ્રવાસે છે, ત્યારે આજે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના પરિસરમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્રના મહાસચિવ સાથે મુલાકાત કરશે। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના પરિસરને નિહાળીને સરદાર પટેલને પુષ્પાંજલિ બાદ મોઢેરાની મુલાકાત લેશે। આ ઉપરાંત બંને વૈશ્વિક નેતાઓ વચ્ચે અલગથી એક બેઠક થશે, જેમાં મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે કેવડિયા એકતાનગર ખાતે લાઇફસ્ટાઇલ ફોર એન્વાયરમેન્ટ અને હેડ ઓફ મિશનની કોન્ફરન્સમાં યુનોના મહાસચિવની ઉપસ્થિતિમાં મિશન લાઇફનું લોન્ચિંગ કરશે। 120 દેશના રાજદૂતો એકતાનગર ખાતે ઉપસ્થિત રહેશે। ગુજરાતના ઇતિહાસમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્રના મહાસચિવ કોન્ફરન્સમાં ભાગ લઈ રહ્યા હોય તેવી પ્રથમ ઘટના છે। આણંદ જિલ્લાના પીપળાવ ખાતે આવેલ એશિયાની પ્રથમ ઉર્જા સહકારી મંડળી દ્વારા સૂર્ય શક્તિ યોજનામાં જોડાયેલા ખેડૂતોનો એક તાલીમ વર્ગ રાખવામાં આવેલ હતો। દેશમાં એક દશક પહેલા કોઈ માનવા રાજી નહોતું કે સૂર્ય ઉર્જાથી આવક પણ થાય। તે વાતને આજે તેજસભાઈ પટેલની અથાગ મહેનત અને ખેડૂતો માટે કંઈક કરવાની ભાવના એ સિદ્ધ કરી છે। આજે 3 કરોડ યુનિટ વીજળીનું ઉત્પાદન અને સાથે 21 કરોડ જેટલી આવક આ યોજના દ્વારા ખેડૂતો મેળવી ચૂક્યા છે। અને સરકારના જે પરિબળો છે, જે સિસ્ટમ કેવી રીતના ચાલવી જોઈએ એના માટેના અવેરનેસ પ્રોગ્રામનો આજે કાર્યક્રમ ભક્તિબાગ ખાતે રાખ્યો છે। તેની અંદર જે ખેડૂતોએ સોલરાઇઝેશન સિસ્ટમથી જે લાભ મેળવ્યા છે તેની સાથે વધુ કેવી રીતના લાભ મેળવી શકાય તેની આજે પૂરી સરકાર તરફથી લોકોને પૂરેપૂરી જ્ઞાન પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે। અડગ મનના માનવીને હિમાલય પણ નડતો નથી, આ કહેવત ચરિતાર્થ કરી બતાવી છે સુરતના મનોદિવ્યાંગ બાળકોએ। શહેરના રાંદેર વિસ્તારના શિલ્પા સ્કૂલ ઓફ સ્પેશિયલ ચિલ્ડ્રનના 100 જેટલા મનોદિવ્યાંગ બાળકોએ દિવાળી નિમિત્તે હજારો દીવડા બનાવ્યા છે। અહીં શાળામાં અભ્યાસ દરમિયાન અલગ અલગ પ્રકારની એક્ટિવિટી કરવામાં આવે છે, ત્યારે આ ખાસ પ્રકારની એક્ટિવિટીના કારણે બાળકોનું સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ થાય છે। સાથે જ 5 વર્ષથી 18 વર્ષ સુધી બાળકોને આ તાલીમ આપવામાં આવે છે। એટલું જ નહીં, આ બાળકો
લોકો આત્મનિર્ભર બનવાના હેતુથી તહેવારને અનુરૂપ ચીજ વસ્તુઓ તૈયાર કરે છે। दिवाली तक जो भी संबंधित वस्तु है ये बच्चों बनाते हैं। हम लोग इन लोगों बच्चों से दिया में कलर करवाता है, उसको डेकोरेशन करते हैं, फिर तोरण बनवाते हैं, वुडन ट्रे बनवाते हैं, उसमें हम लोग पेंटिंग कराते हैं, जूट बैग में कलर कराते हैं, पेपर बैग बनाते हैं। अभी वो बड़े बड़े कंपनी जो है सूरत में एंड सूरत के बाहर, वो लोग हमारे से ये गिफ्ट के हिसाब से दिवाली में गिफ्ट के हिसाब से ले जाते हैं। वो पैसे से हम लोग स्कूल भी चलाता है एवं बच्चों के संबंधित कोई भी कुछ भी करना होता है, इसमें हम लोग बच्चों को आत्मनिर्भर बने इसके लिए थोड़ा बहुत इनको भी मदद करते हैं। કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દીવ ખાતે ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલમાં 5 દિવસીય રાજ્ય પુરસ્કાર જાંચ પરીક્ષા શિબિર યોજાઈ ગઈ, જેમાં સેલવાસ, દમણ, દાદરા નગર હવેલી, દીવ અને ગુજરાતના 50 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લીધો હતો। અહીં વિદ્યાર્થીઓને 5 દિવસ સ્કાઉટ એન્ડ ગાઈડને લગતી વિવિધ તાલીમ આપવામાં આવી હતી। સમાપન સમારોહના દિવસે ભાગ લેનાર વિદ્યાર્થીઓને મેડલ, સર્ટિફિકેટ અને ટ્રોફી આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા। દીવમાં પ્રથમ વખત આવી શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ये इनके 2.5 साल का प्रयास, 2.5 साल का जो मेहनत है, आज उसका इनको रिजल्ट मिला है। ये हमारे जो बच्चे आए हुए हैं, हमारे गैलेक्सी इंग्लिश मीडियम स्कूल से मोर देन 35 बच्चे, 6 बच्चे कोडिनार से आए हुए हैं। ये हमारे पास कोडिनार के ही बच्चे खड़े हुए हैं। दमन और सिलवासा से भी हमारे पास 9 बच्चे आए हुए थे। इन बच्चों ने कैंप का आनंद लिया और सारे बच्चे पुरस्कार की परीक्षा प्राप्त हुए और आने वाले समय में ये सब हमारे बच्चे राष्ट्रीय पुरस्कार लेंगे, ऐसी हम कामना रखते हैं। हमने बहुत मज़ा भी किया है और हमने बहुत कुछ यहाँ पर सीखा है और मैं सबको यही बताना चाहूँगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्काउटिंग में जुड़ना चाहिए, जिससे कि हमारा देश भी आगे बढ़े और हमारे देश के जो बच्चे हैं उनमें मूलभूत कर्तव्यों का प्रचार प्रसार हो। तो सीधे दृश्य हम आपको केवड़िया से दिखा रहे थे। बेहद अहम अपने आप में प्रधानमंत्री मोदी के साथ यूएन महासचिव, जिन्होंने सरदार पटेल के स्टैचू ऑफ यूनिटी तो केवड़ियाथी नरेंद्र मोदी साहेब ने जीवन प्रसारण, वहां पर मिशन लाइफ का शुभारंभ करेंगे और यूएन महासचिव मौजूद रहेंगे। हमारे संवाददाता मेघना हमारे साथ मौजूद। સમાચારમાં આગળ વધીએ। પ્રકાશના પર્વ દિવાળી પૂર્વે ભારત તિબેટ સંઘ મહિલા વિભાગ જામનગર દ્વારા ઓમ ટ્રેનિંગના દિવ્યાંગ બાળકો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા દીવડાઓની ખરીદી કરવામાં આવી છે। આ દીવડાઓની સામૂહિક ખરીદી કરી દિવ્યાંગ બાળકોને આર્થિક રીતે મદદરૂપ થવાનો પ્રયાસ કરાયો છે। આ તકે ઓમ ટ્રેનિંગ સેન્ટરના ડિમ્પલ મહેતા દ્વારા ભારત તિબેટ સંઘ દ્વારા દિવ્યાંગ બાળકોને મદદરૂપ થવાના પ્રયાસ માટે આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો। આ પ્રસંગે ભારત તિબેટ સંઘ મહિલા વિભાગના પ્રદેશ સચિવ ડિમ્પલ રાવલ તેમજ જામનગર જિલ્લા મહિલા વિભાગના પાયલ શર્મા સહિત અનેક મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। A થી Z બધી વસ્તુઓ દિવ્યાંગ બાળકો દ્વારા જ્યારે બનાવવામાં આવે છે ત્યારે તેમને પ્રોત્સાહન કરવા માટે એમને પ્રોત્સાહિત વધુ થાય અને તેમને એવો ફાયદો થાય એ માટે અમે બહેનો ભારત તિબેટ સંઘની બહેનો આજે અહીંથી દીવડાની ખરીદી કરી છે। ઓમ ટ્રેનિંગ સેન્ટરમાં આવે છે, અલગ અલગ દીવડા બનાવે છે, ઓમ વાળા સાથિયા વાળા પછી મટુકડી વાળા અલગ અલગ સાથી દીવડા બનાવે છે। પાટણમાં ગુજરાત સરકારના વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિક વિભાગના નેજા હેઠળ કાર્યરત રિજિયોનલ સાયન્સ સેન્ટર વિકસાવવામાં આવ્યું છે, જ્યાં બુધવારે ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટ, જેડા, ગાંધીનગર અને ગુજકોસ્ટ ગાંધીનગરના સંયુક્ત ઉપક્રમે આબોહવા પરિવર્તન વિષય પર શિક્ષકો માટે 2 દિવસીય તાલીમ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠા જિલ્લાની જુદી જુદી શાળાઓમાંથી આવેલ 150 જેટલા શિક્ષકોએ ભાગ લીધો હતો। આ કાર્યક્રમનો ઉદ્દેશ શિક્ષકોને ટકાઉ વિકાસ માટે ક્લાઇમેટ ચેન્જ વિશે જાગૃત કરવાનું હતું, જેથી શાળાના બાળકો પણ આબોહવા પરિવર્તનથી માહિતગાર બને। બનાસકાંઠા जिला, સાબરકાંઠા जिला, મહેસાણા जिला અને પાટણ જિલ્લાના સ્કૂલ્સના શિક્ષકો માટે બ્રિંગિંગ ક્લાઇમેટ ચેન્જ ટુ ક્લાસરૂમ એટલે કે જે
જલવાયુ પરિવર્તનના જ્ઞાન છે એના સ્કૂલ સુધી પહોંચાડવાની ગુજરાત સરકારની ક્લાઇમેટ ચેન્જ વિભાગ, ગુજકોસ્ટ અને ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી વિભાગના સંયુક્ત પ્રયાસથી સંપન્ન થઈ રહ્યા છે. सभी लोगों को एजुकेट करना है। वो जो एजुकेट करना, वो जो माध्यम है, हमारा माध्यम है जो गुजकोस्ट कर रहा है, हम तो सिर्फ इधर पॉडकास्ट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उसको हर लोगों का पास पहुंचाना है और उसका मतलब समझना है एंड उसको इम्प्लीमेंट करना है। वो सारे चीज़ें जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात गुजकोस्ट कर रहे हैं। ભાવનગર જિલ્લાના ઘોઘા તાલુકાના ખડસલિયા ગામની વાડી વિસ્તારમાંથી કપાસ તથા બાજરીના પાકની આડમાં ગાંજાનું વાવેતર ઝડપાયું હતું. પોલીસે રેડ કરતા વાડીમાંથી 145 લીલા ગાંજાના છોડ મળી આવ્યા હતા. ભાવનગર એસઓજીને મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે પોલીસે ખડસલિયા વાડી વિસ્તારમાં રેડ કરતા ₹7,47,830 ની કિંમતના 149 કિલો 556 ગ્રામ ગાંજાના છોડ સાથે ભોળાભાઈ ડાયાભાઈ ડાભીને ઝડપી લીધો હતો. જે અંગે ભાવનગર એસઓજી પોલીસે એનડીપીએસ એક્ટ હેઠળ ઝડપાયેલા ઇસમ વિરુદ્ધ ગુનો રજીસ્ટર કરાવ્યો હતો. પૂછપરછ કરતા ભોળાભાઈ ડાભી તથા સરતાનપર ગામે રહેતા તેના મિત્ર ભગતભાઈ ગોવિંદભાઈ ચૌહાણે ભાગીદારીમાં ગાંજાનું વાવેતર કર્યું હોવાનું સામે આવ્યું હતું. और हमारी आने वाली पीढ़ियों पर धन धान्य निरोगिता और समृद्धि के आशीष बरसाती रहे। इसी लाइफ के ग्लोबल लॉन्च के अवसर पर हम सभी आमंत्रितों का भी हृदय से स्वागत करते हैं। देवियों और सज्जनों, भावी पीढ़ी जिसे हमारे पर्यावरण की धरोहर को संजोकर रखनी है, ऐसे इन बच्चों को अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ मंचासीन महानुभावों का स्वागत अभिवादन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी से अब मेरा सादर अनुरोध है आपके स्वागत भाषण के लिए। मिशन लाइफ के ग्लोबल लॉन्चिंग अवसर पर हमारे मार्गदर्शन करने उपस्थित विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री एंटोनिया गुतारेस, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी, संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधिगण और भारत के मिशन के प्रमुख और सभी केंद्रीय मंत्री श्री एवं प्रतिष्ठित अतिथिगण, आप सभी का मिशन लाइफ के ग्लोबल लॉन्चिंग समारोह में हार्दिक स्वागत करता है। आज हम इस मंच से गौरव के साथ कह सकते हैं कि जब विश्व में ग्लोबल लीडर सोलर एनर्जी तथा ग्रीन क्लीन एनर्जी की सिर्फ बात कर रहे थे, तब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपनी दूरदर्शिता से इस विषय में ठोस कदम उठाए थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान उनके नेतृत्व में गुजरात एशिया का पहला ऐसा राज्य था जिसने 2009 में एक अलग क्लाइमेट चेंज विभाग की शुरुआत की थी। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विजन से ही राज्य में कैनाल टॉप सोलर प्लांट स्थापित किए गए और सीमावर्ती क्षेत्र चारणका में 730 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना हुई है। इतना ही नहीं, विश्व जब क्लाइमेट चेंज के सामने लड़ने के रास्ते खोज रहा था, तब नरेंद्र भाई मोदी जी ने
अपने अनूठे विजन कन्वीनियंट एक्शन पुस्तक द्वारा पूरे विश्व को इस समस्या का समाधान का मार्ग दिखाया था। पर्यावरण सुरक्षा और क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के योगदान को यूएन ने भी सराहा है और 2018 में चैंपियन ऑफ द अर्थ का गौरव सम्मान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2021 में क्लाइमेट चेंज पर ग्लासगो में हुए COP26 के दौरान लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की अवधारणा को दुनिया के समक्ष रखा था। उन्होंने वैश्विक समुदाय से पर्यावरण मित्र जीवन शैली के लिए लाइफ को अंतर्राष्ट्रीय जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने की अपील की थी। अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान में कार्यरत और भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर लाइफ को एक वैश्विक आंदोलन बनाया जा रहा है, जो भारत में पर्यावरण मित्र संस्कृति और परंपरागत प्रथाओं का निर्माण करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में पहल करते हुए गुजरात ने देश में सबसे ज्यादा 4 लाख से अधिक घरों को सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के साथ कवर कर लिया है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में गुजरात ने अपनी सर्वसमावेशी और प्रगतिशील नीतियों के जरिए बिन परागत ऊर्जा क्षेत्र में 18 गीगावाट की स्थापित क्षमता की उपलब्धि हासिल की है। आज हम सब एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में उपस्थित हैं। भारत की एकता और अखंडता के शिल्पी सरदार साहब की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की प्रेरणा और संकल्प का परिणाम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस परिसर को इको फ्रेंडली और इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विश्व समक्ष प्रस्तुत करने हमें मार्गदर्शन दिया है। पर्यावरण रक्षा और ग्रीन क्लीन एनवायरनमेंट के हर पहलू की इस एकता नगर में आप बारीकी से अनुभूति कर सकते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में शुरू किया गया यह वैश्विक मिशन निसंदेह 21वीं सदी का सबसे बड़ा पर्यावरण आंदोलन बनेगा। अनुभूति कर सकते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में शुरू किया गया यह वैश्विक मिशन निसंदेह 21वीं सदी का सबसे बड़ा पर्यावरण आंदोलन बनेगा। इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सभी का स्वागत करते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और अब समय है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना से चरितार्थ और उनके दूरदर्शी नेतृत्व से अनुपालित लाइफ के सिद्धांत को दर्शाती और उसमें जन जन की भागीदारी का आह्वान करती एक लघु फिल्म के निदर्शन का। सब कहते हैं कि दुनिया बदल रही है। कभी कभी मुझे भी लगता है हमारी दुनिया बदल रही है, पर अच्छे के लिए नहीं, बुरे के लिए। पर ये हुआ कैसे? मैं भी चाहती हूँ हमारी दुनिया बदले, लेकिन अच्छे के लिए। और जब 2030 में मैं 21 साल की हो जाऊंगी, जोश और सपनों से भरी, सिर्फ मैं ही नहीं, लाखों लोग और भी, तब क्या हमारी दुनिया हमारे सपने पूरे कर पाएगी? 2030 तक ही तो हम सब ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने का वादा किया है ना? मतलब आज से 2000 दिन बाद क्या हम वो वादा पूरा कर पाएंगे एक साथ? हाँ, बिल्कुल। शायद इसका हल हमारे पास है, बस जरूरत है तो इसे जन आंदोलन बनाने की, स्वच्छ भारत मिशन की तरह। यही तो लाइफ है। लाइफ, पता है ये मैंने सबसे पहले कहाँ सुना? ये शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर
कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट भारत में बना दुनिया के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी की ये सोच सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए है। किसी एक इंसान या समुदाय के लिए ही नहीं, हर राष्ट्र के लिए है। और हम सब इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं इन 5 कदमों से। पहला कदम वही जो हमारे दादा दादी, नाना नानी हमेशा करते आए हैं। सदियों से सुनते बोलते आ रहे हैं कि मौसम में लगे और आसपास उगे वही खाओ पियो, सेहत चौकस और साथ में खाने और ईंधन की बचत भी। நமது உணவுகள் இப்பொழுது மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. நாம் தினைகளை இந்த நேரத்தில் வரவேற்றுக் கொள்கிறோம். ஆனால் தினைகள் நமது உணவுகளையும் மகிழ்ச்சியையும் கலாச்சாரத்தையும் அறிவு கொண்டு இருக்கிறது. அதனாலே நாங்கள் தினைகளை வரவேற்றுக் கொள்கிறோம். दूसरा कदम, कदम उठाओ, समझे? मेरी रोज की सवारी, बस नंबर 11, मेरे पैर। मैं रोज साइकिल से ऑफिस जाता हूँ क्योंकि मेरी कंपनी हमें वॉकिंग, साइकिलिंग, कारपूलिंग के लिए एनकरेज करती है। अगर हम सब मिलके ये कर सकते हैं तो पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं। तीसरा, सही चुने और सही चुन पाए इसके लिए डिमांड भी करें। सोसाइटी में घर खरीद रहे हैं, बड़ा डिसीजन है, पर कुछ चीज़ें नॉन नेगोशिएबल हैं, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग एंड सोलर पैनल। और इन्हें पूरा करना रियल एस्टेट इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले कस्टमर हमारे पास आते थे ब्रांड के लिए, प्राइस के लिए, वारंटी के लिए। अब कस्टमर आते हैं हमारे पास 5 स्टार रेटिंग के लिए और एलईडी बल्ब्स के लिए। आजकल ज़्यादातर डिलीवरी कंपनीज ई बाइक यूज़ करने लगी है, अच्छा लगता है। चौथा कदम सिंपल, लाइट स्विच ऑन करने के लिए स्विच ऑफ करो। पांचवा कदम, सबको बताओ और इस आंदोलन को घर घर ले जाओ। मेरे देश को अपना वादा याद है और वो वादा हम बातों से नहीं, काम से पूरा करेंगे और हर देश, हर इंसान को साथ लेके पूरा करेंगे। एक्ट टुगेदर लाइफ के लिए। तो ये है लाइफ का जन आंदोलन। विश्व भर के देश उत्साहित है लाइफ के इस अभियान में भागीदारी के लिए। अर्जेंटीना, एस्टोनिया, फ्रांस, जॉर्जिया, गयाना, मेडागास्कर, मालदीव्स, मॉरिशस, नेपाल और यूनाइटेड किंगडम्स, इन सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के उत्साहवर्धक और लाइफ के प्रति उनके सहयोग से सबर उनके इन संदेशों को अब आइए सुनते हैं। Buenas tardes a todos y a todas. Estoy aquí en Buenos Aires, pero no quise estar ausente en este encuentro, al que nos ha convocado el primer ministro Modi. El mundo vive un tiempo singular, un tiempo asignado ya no solo por una pandemia, sino por una profunda desigualdad. Una desigualdad que hace que muy pocos concentren el ingreso y el hambre se distribuya entre millones de habitantes del mundo. El mundo además sufre una crisis porque está usando y malgastando recursos no renovables que además generan efectos en el ambiente definitivamente maliciosos.
También es cierto que esa concentración y la guerra que se ha desatado ha generado un problema en la seguridad alimentaria del mundo que debe llamar la atención de todos los países de la comunidad internacional. Frente a esa realidad, tenemos que ver cómo enfrentarla. Y me parece que esta iniciativa, la iniciativa LIFE, puede servirnos en mucho a encontrar un camino. Porque uno de los caminos es hacer que los estados y la sociedad civil puedan lograr los consensos necesarios para ir poco a poco saliendo de esta crisis que hoy vivimos. Tenemos que hacer que el mundo se desarrolle, que la pobreza baje, que la igualdad aparezca. Y tenemos que lograr para eso que las producciones sean sustentables, sean innovadoras y fundamentalmente sean respetuosas del medio ambiente. Sabiendo que la primera democracia del mundo, India, se ha abocado a buscar una salida, yo me quedo más tranquilo. Y lo que no quiero es dejar de sumar a mi país en esa iniciativa, en esa búsqueda. Aquí estamos, acompañando la iniciativa LIFE para hacer que los objetivos de sostenibilidad para el desarrollo con miras al 2030 podamos hacerlo posible entre todos y todas, cada uno de los habitantes de esta tierra. Muchas gracias. Dear friends, Namaste. The need for collective response to address climate change and biodiversity loss is stronger than ever. We are grateful to Prime Minister Modi for his leadership, together with the UN Secretary General, in launching Mission Life. The power of change lies in working together towards a common goal and engaging all the people and communities on the planet. An excellent example of this is World Cleanup Day. It is an extensive one-day action that started in Estonia and has spread to 191 countries. At COP27, we will call for even more countries to join us. By the way, India has been very active in World Cleanup Day. Last year, an amazing 1.2 million people took part in this initiative in India. That is impressive. Thank you. Russia's war against Ukraine has triggered a global energy crisis. This further underlines the need to move towards renewable energy and sustainability. We can achieve even more if we combine the green transition with the digital one. We have digitized the energy network in Estonia and see the potential this has for energy savings as well as innovation. It is time for a profound change in our lifestyle. We need to place sustainability front and center. I'm glad that the climate action is one of India's G20 presidency priorities, and I wish you a successful presidency. Dear Prime Minister, dear Narendra, dear colleagues, dear friends, Namaste. I wish I could be with you in Kevadia for this very special moment. At a time when our world is subject to increasing geopolitical tensions, we have no choice but to choose cooperation over division for one single reason. No one can address global challenges, and especially climate change, on its own. The LIFE initiative is part of this agenda for stronger cooperation. I wanted to say a few words to wish you great success in its implementation. At the current pace, if the global population reaches 9.6 billion by 2050, the equivalent of almost 3 planets could be required to provide the natural resources needed to sustain current lifestyles. Governments, businesses, people, we must therefore all cooperate and rethink our models and behaviors. Sustainable consumption is all about doing more and better with less. We are already on that track. The current surge in energy prices is leading many countries in Europe to take the path of sobriety. In France, we will reduce our energy consumption by 10%, acting all over the board in transportation, housing, industries, and other sectors.
but this will not be a temporary response before going back to our old ways. What we are talking about is a paradigm shift, because we will not reach net zero by 2050 if we don't act on the demand side and substantially reduce our energy consumption. Beyond the current crisis, as the effects of climate change are already unfolding, every citizen should now be aware that it is no longer possible to use natural resources such as water as if they were inexhaustible. We need to meet this challenge together. By promoting ambitious public policies in all sectors, by launching coalitions of the willing, I am pleased in that regard that France and India agreed on leading a global initiative on the end of single-use plastics, and by fostering a common partnership between citizens committed to change their lifestyles and therefore the world. The LIFE initiative, Prime Minister Modi, will give us this opportunity. France looks forward to working with India to make this initiative a success, including in the perspective of the Indian presidency of the G20 next year. Thank you for this initiative, and thank you for your attention and your commitment. Excellency Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, dear ladies and gentlemen, dear friends, I am honored and pleased to address this distinguished audience at today's remarkable event and to congratulate India for taking the lead to launch this extraordinary mission in the beautiful city of Kevadia of India. Georgia welcomes and fully supports this global initiative timely introduced by His Excellency Narendra Modi, which promotes an environmentally conscious lifestyle that focuses on the principle of mindful and deliberate utilization. In this regard, we have already taken significant steps to fulfill our international commitments, as well as obligations under the EU-Georgia Association Agreement. To strengthen the environment-related governance systems in the country, Georgia has improved its environmental assessment systems and introduced more effective public participation mechanisms at the earliest possible stage of the environmental decision-making process. Major reforms have been carried out recently in the ambient air protection field to improve air quality throughout the country. Georgia is one of the few countries worldwide where national parks are a genuine high-level national priority, embedded in national policies and strategies. National parks of Georgia have experienced a significant increase, and nowadays it covers almost 12% of our territory. 40% of my country's territory is covered by forests. Therefore, sustainable forest management is an important priority for our government. We spare no effort to implement sustainable forest management that will support the ecological stability of forest ecosystems, enhance the socio-economic benefits for the public, and reduce the pressure on forests. In order to address the negative consequences of climate change, Georgia, in accordance with the Paris Agreement, has updated nationally determined contribution document, which sets a new 2030 climate change strategy and an action plan for mitigation measures. I am proud to state that our country stays committed to continue intensive reforms for the better protection of the environment, biodiversity, and meeting its national and international climate goals. I strongly believe that all together we can achieve our common goal and save our planet. Thank you. Our planet is under threat. More than 75% of Earth's land is substantially degraded, undermining the well-being of billions of people. Collective action is needed to protect our planet. Here in Guyana, we have started. Our forest is the size of England, storing 19.5 gigatons of carbon, one of the lowest deforestation rates in the world. So we are leading by example, and we are building a Guyana on a low-carbon development strategy 2030 that not only look at the environmental value of what we have, but also look at how we can improve livelihood options, create new livelihood options for forested communities, and help people to become prosperous whilst at the same time safeguarding our environment. I therefore wish to extend best wishes to Prime Minister
of India, Prime Minister Narendra Modi, on the launching of the Mission Life logo and mission document, which seeks to mobilize 1 billion Indians to become pro-planet people by 2027, who will practice simple environment and climate-friendly behavior in their daily lives. Congratulations, India, for taking the lead in pioneering this movement. Guyana is committed to protecting and promoting green economic activity through actions that support the Sustainable Development Goals. Simple actions taken every day by citizens across the globe will help to harness the full potential of this collective action. We must do everything within our power to protect and preserve the environment by making the necessary lifestyle changes. All of us, we have an individual and collective responsibility as a family of humanity to do our part in protecting and safeguarding our environment so that future generations can enjoy the beauty of the world we live in. Thank you. Excellences, Monsieur le Premier ministre de la République de l'Inde, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, le changement climatique, la préservation et la protection de l'environnement est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Comme je l'ai annoncé lors de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, les solutions doivent venir de chaque nation, chaque leader et chaque citoyen. Mais surtout, les pays émetteurs doivent tenir leur engagement. Cela demande un effort commun de chaque pays pour préserver notre planète. Nous savons tous que la forêt est le poumon de la Terre. Et pourtant, l'utilisation du charbon de bois et du bois de chauffe reste une pratique courante sur l'ensemble du continent africain en général et à Madagascar en particulier. Dans mon pays, l'utilisation du charbon de bois pour la cuisson impacte la destruction d'1 hectare de forêt par an, ce qui est dévastateur, raison pour laquelle nous lançons une lutte contre la déforestation avec la promotion du clean cooking afin de réduire drastiquement l'utilisation et l'usage du charbon. Pour ce faire, nous allons favoriser l'utilisation du réchaud bioéthanol comme alternative dans chaque foyer. C'est en changeant les pratiques et les mentalités que nous pouvons changer les choses. Je suis convaincu que LIFE pourrait devenir l'un des points tournants dans notre lutte contre la crise climatique. Je remercie l'Inde, à travers son Premier ministre, qui est un leader inspirant en matière de protection de l'environnement, de nous avoir rassemblés autour de cette cause. C'est avec espoir et conviction que je vous rejoins dans cette mission. Ensemble, engageons-nous en faveur du développement durable pour un monde meilleur que nous souhaitons pour nos enfants. Mesdames et messieurs, il est temps de transformer nos discours en actions concrètes. Je vous remercie de votre attention. Bismillahirrahmanirrahim. One of the greatest breakthroughs we have made in recent years is recognizing that a clean, healthy, and sustainable environment is a fundamental human right. We must at the same time give back to nature. It is time we unpick the lessons left behind by our early ancestors. They taught us that love and respect for our natural heritage are essential for sustainable and resilient development. Prime Minister Modi's mission life could not have come at a more crucial juncture. The ill effects of the climate crisis come at us with full force, growing in severity the longer we let our inactions drag on. This ambitious initiative is a call for action. Let's not end it there. You see, the best chances of our very survival is on our own hands. Together, let's reflect on our lifestyles and make swift changes towards eco-friendly habits. Simple things in our everyday lives, like choosing to walk more instead of driving, or planting trees wherever we can, all add up to redressing environmental
degradation. Individual actions may appear insignificant on their own, but when pulled together, they have the power to spur transformative impact. Modi stands with the pro-planet people of India. We will do our part to make sure the health and wealth of our planet survive to benefit tomorrow's generations. Governments are joining hands with businesses around the world to address environmental issues. However, policy reforms and economic initiatives are not enough to save our planet. Lifestyle changes at the individual level and behavioral changes at the community level are needed to reduce the strain on the environment. I therefore strongly support the movement launched by Prime Minister Shri Narendra Modi ji to build on good practices at the level of individuals, communities and institutions in order to accelerate the transition to a more sustainable